audible to all of you? Yes? Okay. Great. So very good evening guys and welcome to today's session. Today we are going to focus on the topic of probability. And probability as a topic, what exactly is your viewpoint on this topic? Because I see a lot of people being very afraid of this topic, थोड़ा डरते हैं and they are like कि सर ये तो नहीं समझ आ रहा है, क्या करें, कैसे करें. I've seen a lot among people, right? But once you understand the main concept, the main crux of this particular topic, I don't think that there should be any problem with understanding it or even applying any thing in the questions. But yes, probability में अगर mastery करनी है तो permutation combination, basically counting skills आनी चाहिए, because वहीं से सब कुछ derive हुआ है. Okay, everything has been derived from the counting principles. So, have you guys done this topic before? Just before starting, I want to check. क्या ये टॉपिक आप एक बार कर चुके हो एटलीस्ट वंस बिफोर यू हैव डन इट राइट ओके few people haven't नहीं अच्छा स्कूल नहीं यहाँ पे बोल रहा हूँ कैटकिंग में करा है आपने ओके सो वी हैव मिक्स्ड बैग ऑफ पीपल some people have done it some people haven't done it so basics से obviously I will want to go into detail with respect to the basics and then maybe we can take some good questions ठीक है great. So probability is what? Basically probability is the chance of a particular event happening. ठीक है? It's like कि it's like दो countries के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा है जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है एंड लास्ट 10 मैचेस में इंडिया 7 बार जीती है सपोज ऑस्ट्रेलिया 3 बार जीती है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट मैच इंडिया जीतेगी या क्या प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगी बेसिकली टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड आपके फेवरेबल आउटकम्स उसका रेशियो इज व्हाट वी फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी इज व्हाट इट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन द पॉसिबल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी में हम रेशियो निकालते हैं फेवरेबल मतलब जो आपको चाहिए वो आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स जैसे कि अगर आपने कोई कॉइन टॉस करा ठीक है या तो हेड्स आ सकता है गाइस या फिर टेल्स आ सकता है करेक्ट हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है सो सपोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स टोटल दो पॉसिबिलिटीज है हेड्स एंड टेल तो हेड्स आने की एक उसमें से एक बार हेड्स आता है एक बार टेल्स आता है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 या 50% ठीक है बट इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे what exactly will be expected in the exam let us try to focus on that चलो ये derangements वगैरह पार्ट आई थिंक ये सब आप लोग कर चुके होंगे पहले what exactly is probability number of which ways in which an event occurs upon the total number of possible outcomes कितने क्वेश्चंस आते हैं ओके दैट्स अ इम्पोर्टेंट पार्ट सो देखो मॉडर्न मैथ्स में ना 5 सवाल आप पकड़ सकते हो जिसमें आपको पीएनसी प्रोबेबिलिटी एंड सीक्वेंसेस एंड सीरीज ये सारी चीजें आएंगी तो प्रोबेबिलिटी के एक दो सवाल तो मेरे हिसाब से आने चाहिए इन दी फाइनल कैट एग्जाम एंड बाकी हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे अब प्रोबेबिलिटी में भी अलग अलग चीजें हैं अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है जो आपको समझनी पड़ेगी तभी जाके आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाओ ठीक है जैसे कि सबसे पहली चीज रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम हैज टू बी अमंग अ सेट ऑफ इवेंट्स दैट आर कंप्लीटली नोन बट द एग्जैक्ट आउटकम इज नॉट नोन एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस ठीक है अब डाइस जब हम थ्रो करते हैं टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास 1/6 आउटकम्स है टोटल 6 आउटकम्स है राइट बट कौन सा आउटकम आएगा वो तो हमें नहीं पता सो अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वेयर वी नो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स वो पता होना चाहिए तभी आप वो वाला रैंडम एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करोगे ठीक है सो ये चीज ध्यान में रखना कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात होती है तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीड टू बी नोन कौन सा आउटकम आएगा वो नहीं पता बट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीड टू बी नोन ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट टर्म व्हाट इज द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट वी नीड टू नो सैंपल स्पेस बेसिकली पूरा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स मतलब जब आप डाइस थ्रो करते हो तो 6 आउटकम्स आते हैं करेक्ट पॉसिबल है सो ये जो पूरा लिस्ट है इसको सैंपल स्पेस बोला जाता है ओके इट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस
What is an event? The event is the set of desired outcome of a random experiment. मतलब the event of getting a prime number when you throw a dice. Okay, अब prime number क्या क्या है हमारे पास 2, 3 और 5. So the event of throw, ये जो है ये हमारा favorable outcomes है guys, and this is the total sample space. This is the total number of the favorable outcomes that we have. फिर mutually exclusive events. One is neither prime nor composite. Prime number starts from 2. Okay. And mutually exclusive events की जब बात करें मतलब जो events साथ में नहीं हो सकते, ठीक है? The events that cannot occur together. तो अगर मैं suppose बोलूं कि event of getting a prime number and event of getting a 4. अब 4 prime number तो है नहीं, ठीक है? तो 4 and prime number दोनों चीजें साथ में तो नहीं हो सकती, है ना? 4 and prime number तो साथ में नहीं आ सकता. So this is like a mutually exclusive events. Exclusive मतलब साथ में नहीं हो सकता. And similarly equally likely events जो मैंने आपको head and tails का बताया था, जिनकी probability of happening is same, right? तो अगर मैं किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि these events are equally likely, मतलब उनकी probability of happening is going to be the same. Yes. And similarly independent events. Independent events मतलब किसी एक particular event का दूसरे event से कोई लेना देना नहीं है. मतलब the event of getting a heads while flipping a coin and the event of getting a prime number while rolling a dice. क्या ये दोनों events के बीच में कोई relationship है guys? Coin अपने तरफ से it will be flipped and जो dice है अपने तरीके से roll, so there is no relationship between them. So these are independent events. Okay? मतलब एक event का होना दूसरे event को किसी भी तरीके से impact नहीं करता. अगर मैं आपको बोलूं कि कोई event ऐसा है जिसका the happening of that actually affects the other event, okay? तो इस basically the events are dependent on each other. तो ये situation आ जाता है of conditional probability. What is conditional probability? Basically Bayes theorem जो बोला जाता है उसका क्या मतलब है? The probability of occurrence of an event is actually dependent on the occurrence of some other event. Basically dependent events हो जाते हैं. जैसे कि example ले लेते हैं, the probability of getting a king, okay, in a pack of cards, the probability of getting a king, provided it is a red color card. The probability of getting a king, provided it is a red color card. ठीक है? मतलब आपको red color card, the probability of getting a king and a red color card. ठीक है? अब ये वाले situations को probability of getting a king, provided it is a red color card. The probability of getting a king, provided it is a red color card. अब ये वाले situation में कैसे हम इसको solve करते हैं? Probability of getting a king as well as a red color card divided by the probability of getting a red color card. देखो, जब भी आपको probability of a event A to occur provided B has already occurred, मतलब आपके पास already red color card है, उसमें से probability of getting a king क्या है? ठीक है? समझ आ रही है बात? आपके पास ऑलरेडी सारे रेड कलर कार्ड्स है एंड उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग क्या है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. फर्स्ट इवेंट हो चुका है, सारे रेड कलर कार्ड्स आ चुके हैं आपके पास. सेकंड इवेंट इज गेटिंग अ किंग आउट ऑफ दैट. सो एक्चुअल में 2 किंग्स होते हैं, ठीक है? एंड रेड कलर कार्ड कितने हैं हमारे? टोटल 26 रेड कलर कार्ड है, तो ये प्रोबेबिलिटी इज 1/13. दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/13. एंड यू कैन आल्सो डू इट इन दिस वे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड बीइंग किंग एज वेल एज रेड. किंग एंड रेड, अगर कोई कार्ड किंग भी है और रेड भी, ऐसे कितने कार्ड्स हैं? ऐसे 2 कार्ड्स होते हैं आउट ऑफ 52, करेक्ट? एंड टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? रेड कार्ड्स होते हैं 26 आउट ऑफ 52. तो ये 52 और 52 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल सॉल्व करके सेम आंसर आता है, ठीक है? सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ द फर्स्ट सिचुएशन एज वेल, राइट? Conditional probability में you are taking care of the first situation as well. So are you guys clear till here at least? Just give me a heads up with respect to understanding conditional probability. I think once we take examples, थोड़े question solve करेंगे तो और ज़्यादा clarity आएगी, but एक basic understanding definition of what we are trying to achieve here, that I think you guys have understood, right? ठीक है? Okay, great. So let us try to look at more conceptual things in this particular topic. और क्या-क्या चीजें हैं?
ठीक है, उस पर फोकस करते हैं। ओके, एंड एंड और, तो ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। These words are actually very important. Okay, you want screenshots? Okay, I'll just clear up the screen. If you want, you can take the screenshot. Okay. What did I call Bayes theorem? Yeah, it is called Bayes theorem. अगर आप उस पर डिटेल में पढ़ सकते हो चाहिए तो Bayes theorem, but it is the same thing that is happening. Now talking about and or, and मतलब अगर दो इवेंट जो है अगर वो साथ में हो रहे हैं, ठीक है, एज इन आपको हेड्स भी आ रहा है एंड साथ में आपको प्राइम नंबर भी आ रहा है, मतलब आप जब कॉइन फ्लिप करते हो आपको हेड्स आ रहा है एंड जब आप डाइस रोल कर रहे हो तो आपको प्राइम नंबर भी आ रहा है। सो दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, करेक्ट। इवेंट ए भी हो सकता है एंड बी भी अलग से हो सकता है, तो यहाँ पे एंड यूज करते हैं। जब एंड की बात होती है, एंड इज बेसिकली इंटरसेक्शन ए एंड बी, the probability of getting a heads while flipping a coin and getting a prime number while rolling a dice. तो आपको दोनों के probabilities individually multiply करने हैं. That is going to give you the final value. So probability of getting a heads क्या है 1/2, probability of getting a prime number क्या है 3/6, so basically 1/4 is the total probability of getting heads as well as a prime number. ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना। बट ऐसा भी हो सकता है कि या तो इवेंट ए होगा या फिर इवेंट बी होगा, मतलब या तो आपको हेड्स आएगा या फिर आपको प्राइम नंबर मिलेगा व्हेन यू रोल द डाइस। बोथ द थिंग्स विल नॉट हैपन टुगेदर, ओके, बोथ द थिंग्स विल नॉट हैपन टुगेदर। बेसिकली ये वो सिचुएशन है जब आपके जो दोनों इवेंट्स है कैन नॉट अकर टुगेदर, तब आपको सिंपली जब भी और वर्ड यूज हो जाए, बिकॉज बोथ कैन नॉट अकर टुगेदर, तो आप सिंपली यू एड अप द प्रोबेबिलिटीज, ओके। In that case, you just add up the probabilities when both the things cannot happen together. Okay, we will be taking cases, guys. जब और की बात होती है, मतलब OR is used, it's basically probability of A union B. Okay, as in A अलग से हो रहा है and B अलग से हो रहा है. These events are happening separately. They have separate probabilities. But when you have both the events occurring together, you have an intersection. ठीक है? यहाँ तक sorted है, guys. Are we clear till here? Yes or no? Just let me know in the chat if things are clear. Yes? Okay. ठीक है. फिर इसमें एक और एक स्टेप आता है, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस है, मतलब these are not very, I would say, prominently seen in the exam, but again it's a concept, so I am discussing this with you. Odds for an event to occur and odds against an event to occur. ठीक है? Odds for an event to occur and odds against an event to occur. कौन सा फर्स्ट वाला बताना, एक सेकंड गाइस। केस नंबर 1, अच्छा, सो केस नंबर 1 में एग्जांपल देता हूं प्रोबेबिलिटी। सपोज आपके पास एक you have a team, okay, you have to select a team of 10 folks, okay, you have to, अब 7 मैच इंडिया जीती है लास्ट 10 में से, तो odds in favor of India is basically 7, क्योंकि इंडिया जीती हुई है, ऑड्स इन फेवर, एंड ऑड्स इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो 3/7 है। ठीक है, यूजुअली इस तरीके से दिया रहता है, ऑड्स इन फेवर ऑफ अ टीम विनिंग, सपोज ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया इज 7 एंड ऑड्स अगेंस्ट इंडिया इज 3:7, मतलब लास्ट के 10 एनकाउंटर में 7 बार इंडिया जीती है, 3 बार दे हैव लॉस्ट इट एंड 3 टाइम्स दे हैव लॉस्ट इट, 7 टाइम्स दे हैव वॉन इट। तो ये वाला डेटा आपको दिया रहेगा, इससे आपको प्रोबेबिलिटी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। एंड वो कैसे इवैल्यूएट करेंगे, दिस इज बेसिकली, अगर मुझे ये वाला वैल्यू दे दिया जाए कि इन अ टूर्नामेंट द ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया विनिंग इज 7:3, सपोज आपको दिया है ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया विनिंग इज 7:3, so tell me what is the probability that Australia will win the match, या Australia will win the tournament। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 7 टाइम्स इंडिया हैज वन, तो ऑब्वियसली बाकी के 3 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया हैज वन,
And here we are talking about 7 plus 3, a total of 10 matches. So 3 by 10 is basically the probability of Australia winning. ठीक है. Similarly, अगर ये पूछे, tell me what is the odds in against India is 3:7. The odds against India is 3:7. Tell me what is the probability that India is going to lose. What is the probability India is going to lose? So again, it is going to be 3 by 10 because three situations, the odds are against India. Against matlab they are going to be they are going to be losing. So three situations they will lose, and the total number of situations is basically the sum of all of these. So इससे probability आपको मिलेगी. I think आप लोग अगर अभी आजकल पता नहीं न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं, बट अगर आप स्पोर्ट्स सेक्शन देखोगे ना, कोई भी मैच होगा या टूर्नामेंट होगा, हमेशा ना वहाँ पे odds in favor and odds in against करके लिखा हुआ आता है. If you will carefully have a look, तो आपको ये समझ आएगी कि ये चीज क्या है. Always in the newspapers it is mentioned. Okay, yeah, so you can have a look. This is what, if at all in any particular question it will be asked. ठीक है, तब आपको ये चीज मतलब समझ आ जाएगी कि ओके, odds in favor and odds in against वाला इस तरीके से रीड कर रहा है. समझ आया ये चीज? Okay, this is the different varieties that you can have in the exam. So let's do one thing. Let's take a few questions. Okay, questions कर लेते हैं, and questions थोड़े से good quality वाले हैं. तो अगर आप जो नए बच्चे हैं उनको अगर नहीं आया, ठीक है, don't worry, I will explain everything in detail. So let's quickly get started with some questions. I think that is going to make things clear for everyone. So ये क्वेश्चन मैं पहले समझा देता हूँ कि चीजों का मतलब क्या है, and then you guys can give it an attempt. This is like a conditional probability question. So let's try to understand. Okay? A and B take part in a duel. अब ये duel मतलब है, duel का ये मतलब होता है guys, it's basically a game जहाँ पे they keep on trying, okay, until one person wins. So यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A can strike with an accuracy of 0.6. Yeah, it's like a fight. You keep on doing it until one person wins. Then B can strike with an accuracy of 0.8. So ये आप assume कर सकते हो, maybe it's like a archery competition. So A has the first shot, post which they strike alternately. पहले A strike करता है, फिर B strike करता है, फिर वापस A strike करता है, फिर B strike करता है. ये चीज चलती रहती है till the time one person wins. Now हमें ये निकालना है इस क्वेश्चन में, what is the probability that A will win the duel? Okay, आपको पता है कि A की accuracy 0.6 है, तो उसकी probability is basically 0.6 of winning, and B की accuracy 0.8 है, तो उसकी probability 0.8 है of winning. But it is not about the direct accuracy or respective individual accuracies. Both of them are playing together. Okay, only if B loses, then they go into the next round where A can win. If B does not lose, then obviously next round नहीं होगा and B is declared the winner. So आपको यहाँ पे बताना है what is the probability that A is going to win the duel. How many rounds? There is no specific number for the rounds because you need to play on till A wins. अगर फर्स्ट राउंड खेला A जीत गया, okay, the game is done. फिर उसके बाद अगर फर्स्ट राउंड में A नहीं जीता, सेकंड राउंड हो गया, B cannot win because we only need to find the probability of A winning. So we will only consider the cases where A is winning. So second round में B loses and then the third round में A is going to win. So हमेशा odd number of rounds होंगे, and ये concept लगा के आपको एक attempt दीजिए इस question को, and then हम discuss करेंगे. ठीक है?
క్వశ్చన్ పెట్టండు సాల్వ్ చేయమని చెప్పిండు. నాకు వదిలిపెట్టేసరా, నన్ను వదిలిపెట్టేసావు సార్. లాస్ట్ 5 minutesకి వెళ్దాం కదా, ఆడవారు రారు 7 కంటే 7కి 7:10కి స్టార్ట్ చేస్తారు. Okay, let me explain what exactly is happening. So देखो guys, हमें ना A को जिताना है हमेशा, correct? तो किस तरीके से A जीत सकता है कि suppose A first shot लिया A ने and A का accuracy on point A has won, या फिर A हार गया, B हार गया, फिर A जीता, या फिर A हार गया, B भी हार गया, A भी हार गया, B भी हार गया and फिर A जीता. So basically you can see every odd shot is where they win. Is this something that everyone is able to understand? We have to make A win, whatever be the situation, and it's always going to be alternate strikes, right? So A की winning यहाँ पे probability is 0.6. Next case में A is going to lose, winning probability 0.6 है, तो lose तो 0.4 हो जाएगा, and B का lose will be 0.2 probability, and then A will win 0.6. फिर नेक्स्ट केस में A is losing, B is losing, A is losing, B is losing, and then 0.6. अब ये सारे सिचुएशन में गाइस, ये 0.4 into 0.2 जो है, इसके पावर्स will be used 0.08. ये raised to 1 है, ये raised to 2 है, and so on. Yes, and हर जगह 0.6 बाहर की तरफ आया है, correct? So it's like a geometric progression where the common ratio is 0.08. Yes or no? 0.08. Not able to hear, guys. Are you able to hear me? Is my audio clear? Is everyone able to hear me? Yeah. Okay. So it's basically like a geometric progression where the common ratio is 0.08 and your first term is 0.6. अच्छा 7 के వెళ్తా అంటున్నా 0.6 तो हर एक में कॉमन है first term, and each and every term is basically obtained by multiplying it by 0.4 into 0.2. So it's like a infinite geometric progression. क्या आप लोगों को infinite geometric progression पता है? Do you guys know what exactly is an infinite geometric progression? Okay, a few of you don't know it. ठीक है. तो यार basically ना सीरीज के टॉपिक में ये चीजें आती है एंड इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है. अब ये जो पर्टिकुलर सीरीज मैंने बताई ना, दिस इट इज गोइंग टू बी नेवर एंडिंग. ओके, एवरी टर्म विल बी अरे sum of all terms of a infinite GP. जहाँ पे A is the first term and R is my common ratio, and common ratio मुझे पता है, तो मुझे बस ये evaluate करना है, okay, and that is going to be my answer.
ठीक है, I just need to evaluate that and that is going to be my answer. तो यही चीज उन्होंने करी है यहाँ पे and finally they get it as 15 by 23. You can do the same, but if you are not aware about what exactly is a geometric infinite geometric GP, it's okay. ठीक है, we will be discussing these things, so you don't need to worry about it at all. ठीक है, ये चीजें डिस्कस की जाएगी for sure. But are you guys clear till here? क्या यहाँ तक चीजें समझ आ रही है? Yes. These are specific type of questions, guys. Okay, which will be seen in the exam. ये थोड़ा सा conditional probability पे based है, because the outcome is dependent upon the previous outcome. The next outcome is dependent upon the previous outcome. But I cannot call it a pure case of conditional probability. इस तरीके के questions आएंगे. ठीक है, इस तरीके के questions आएंगे. So moving ahead, let's take some more examples, guys. Some more examples. अगला वाला देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. Yes, let's try out this. ठीक है. So यहाँ पे क्या दिया है कि n is a 3-digit number that is a multiple of 7. What is the probability that it will also be a multiple of 5? बहुत सिंपल है ये, right? Understanding this is very simple. आपके पास एक 3-digit number है जो कि 7 का multiple है. बताइए क्या probability होगी that it will be a multiple of 5 as well? होता ना ना. Yes, as simple as that. होता. What is the smallest 3-digit number we will have? It is 100, right? And what is the biggest 3-digit number will be? 10 నిమిషాల తర్వాత 999. Okay. अब इसमें से कितने numbers ऐसे हैं जो 7 के multiple है? Can you guys tell me how many such numbers will be there which will be multiples of 7? The first one, yes, people have pointed out. First one is 105. And yes, you guys can try. ठीक है, आप लोग try कीजिए. So basically, अगर कोई number 7 and 5 दोनों का multiple है, basically it is going to be a multiple of 35. Because 7 and 5 do not have anything in common. To be a multiple of 35. So what exactly you have to do, guys, is you need to find out all the multiples of 35 between 100 and 999 as well as the multiples of 7 and एक दूसरे को divide कर दीजिए. या फिर अगर आप logically सोच सकते हैं तो well and good. ठीक है, so give this an attempt, guys.
let's discuss this simple one, guys. सीधा solution ही देखते हैं. Not much of a hassle. So just like I told you guys, how many numbers would be multiples of 7? And they just calculated that. That came out to be 128 such numbers. Numbers which are multiples of 35 in the order. You just find out the first and the last one and you get all of them. So 26 such numbers. So 26 total possibilities of multiples of 7 is 128. And out of that, for a number to be multiple of 5 as well, there are 26 such numbers which are favorable events. So this is going to be the probability and that is option C. Okay? Basic understanding of what exactly you need to evaluate. अब counting जो है वो आपको सही से करनी है. The counting part is the part that you need to take care of. Easy, right? Okay. ठीक. चलिए, let's go ahead. Let's see some more questions. Okay. So look at this one. I roll a dice 4 times. In how many outcomes do we have 2 throws having the same number and the other 2 having something different? Okay, 2 throws having the same number and the other 2 having something different. So try to process what has been asked. Okay, it's very important to understand it. Oh, acha. Some people who wanted to see the last solution, yeah, you can have a look at it. I'll just go back again. Question समझ आया? Question number 4. Question number 4. Yes, everyone is clear? Yeah, give it an attempt, guys. I don't know. Okay, चलिए try करते हैं. So I think a lot of people have solved it, but let us try to understand what exactly are we needed to do here. ठीक है? 4 outcomes आएंगे. क्या क्या outcome है guys? 1 से लेके 6 कुछ भी outcome आ सकता है. Correct? उसमें से 2 outcome will be same. Suppose A and A ले लेते हैं. बाकी के जो 2 outcome है will be something different. B या C, something of the other. Correct? This is what is going to happen. Do you guys agree to it? Yeah. अब ये जो सेम है इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? 6 में से, ठीक है, टोटल आउट ऑफ there are 6 options for selecting this. Similarly, there are 6 options for selecting this. अच्छा, 6 ऑप्शंस नहीं बोलेंगे, ये इसके 6 ऑप्शंस हैं, जो भी यहाँ पे है वो सेम will be used here. Correct?
अगर इसको 6 ऑप्शन से सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद 5 ऑप्शंस डी के लिए बच जाएंगे एंड 4 ऑप्शंस इसके लिए बच जाएंगे, करेक्ट? एंड आपस में we can also arrange these 4 things in 4 factorial ways divided by 2 factorial. Why have we divided? Because 2 of them are same. A, B and C, you have to select 3 numbers. You can select this in 6 ways, in 5 ways and in 4 ways. And then you have 4 such numbers which you need to arrange. You can arrange them in 4 factorial ways, but 2 of them are same. So you divide by 2 factorial. So 6 into 5, 30, 30 into 4, 120. हाँ, आप 63 करके भी कर सकते हो, करेक्ट, फॉर श्योर, दैट इज ऑल्सो अ वे टू आंसर दिस. आप 63 से अगर इसको सॉल्व करने जाओगे, सो इन दैट सिचुएशन 6 में से कोई 3 नंबर आपको चूज करने हैं जो कि यूज होगा. 63 का मतलब है नहीं, there will be 4 numbers, right? 2 numbers will be the same and then there will be the 4th one. Oh, and in how do we have 2 throws have the same number and 2 have something different. So ये जो एक तरीका मैंने बताया. अब इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप 6 में से कोई 3 नंबर चूज कर लीजिए जो कि यूज हो जाएगा, करेक्ट? It is not 6 factorial, it is 4 factorial because you just have 4, you are having 4 outcomes that you will be using here to get the final outcome, the final answer, right? 4 outcome करने हैं, ठीक है? Okay, चलो इसका solution देखते हैं. Let's have a look at the solution. Second, let me just clear the screen. Yes. So what does this say? Yes, 720 is the correct answer. So 6 into 5 into 4, ये हमने किया था. इन्होंने किस तरीके से किया कि 6 में से कोई 3 नंबर चूज कर दीजिए, right? We can select the one that is being repeated out of the 3 outcomes. अब कौन सा नंबर जो भी रिपीट हो रहा है, पहले 3 आउटकम्स के 3 अलग अलग नंबर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब वो 3 में से कोई एक नंबर आपने सिलेक्ट किया जो कि रिपीट होने वाला है. समझ आ रहा है? 6 में से 3 नंबर सिलेक्ट कर लिए जो कि यूज होंगे एंड उसमें से एक नंबर जो रिपीट होने वाला है उसको मैंने चूज कर लिया. एंड ये जैसे ही चूज हो गए तो मुझे इवैल्यूएट करने के बाद आंसर मिल जाएगा एंड मुझे सिर्फ इसको अरेंज करना पड़ेगा. तो 4 नंबर्स 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू. क्लियर है? ये समझ आ रही है बात? As simple as that. Out of the 6 numbers you select 3 of them and then out of the 3 that is being selected you select one of them. The reason why we are dividing it by 2 because see 2 outcomes will be exactly the same, guys. 2 outcome जो है वो exactly same हो जाएंगे. So that is the reason हम उसको divide कर रहे हैं by 2 because 2 of them will be exactly the same. आपको पता है ना, repetition होता है तो divide करना पड़ता है. Got it. Okay. ठीक है. So any specific things that you want to ask? Any specific? Okay, all good. Okay. Arrangement इसलिए आया guys because हमें पता नहीं है कि कौन से particular throw में numbers will be repeated. Okay, it will specifically, it has not been mentioned in which particular throw the numbers will be repeated. So that's the reason we have to go for each and every arrangement possible. We have to go for each and every arrangement that is possible. Okay. Okay, great. So that's it from mine, guys. I hope you all enjoyed. Please solve more and more questions.